तो सही ना बिल्कुल सही ना इनको भी सही नहीं ऐसे तो ऑफ कोर्स इट बड़ी है जो बड़ी बात है मैं वही करवा रहा हूं वो देखा इसको पोस्ट स्पेन में यहां पे बड़ा है अभी लास्ट टाइम सलीना में बहुत ज्यादा था तो ये क्या है सब साइड में से नहीं सब ये एक पिछले साल इस अदवार ये ब्लू वॉइस और जिसमें नॉन में वैसे ही है सर अभी है राज ने दिया युवराज आदर्श में से लेकिन वो बस साइड से तो रास्ते में इक्वल ही है कौन उसने दिया तो वो बस मैथ्स और इंग्लिश का था इको भी है इको में से मिलेगा साइड अच्छा एक्चुअली सब्जेक्ट चूज कर लिया ना इको क्यों करेगा कमर्शियल एप्लीकेशन कंप्यूटर तो ये क्या है कंप्यूटर है हां ठीक तो कौन सी होगा छोटी वाली छोटी ग्रामर विंडोज हाउस वाह राज भी तो है राज है राज बोला मुझे उसने तो मैसेज करा राज और प्रदीप भी है राज ने तो मैसेज करा इस बार मेरा ब्रांड नहीं इस बार वो टॉप करना है यार ये नहीं बहुत पहले आई थी मैं स्टार्टिंग में एक सपोर्ट वो ये बैठी थी ना लड़की हां वो है आपने तो चार लोग लास्ट टाइम जो ही चार भी पांच यार वो यार पांच यार तो साइंस के एक तो ओए ये तो है अरे तो मोड़ी तोड़ के गए डांस टाइम पे मैं तो आया नहीं रहा मैं तो बहुत फ्रेंड्स से मिले पता है तुमका आगे और स्कूल से पता है और स्कूल में चार इसके चार स्कूल में कौन सा तो ये भी बात है ना ये भी है हां properties of solids before so तो जब मैं मेरे बुक में इसको नहीं दिया ऐसे दिया अच्छा एनालिटिकल फंक्शन स्टूडेंट का केमिस्ट्री तो क्या फिर नमक से करें मेरे क्यों उसने मेरे को सुबह को पढ़ा है वो सब क्लास में चले गए अपने क्लास में कितना फिर मैंने मुझे वो के लिए हुई ना नहीं आपको तो और मुझे नहीं पता पहले मेरे फ्रेंड्स इसके बाद युवराज को छोड़ दिया सब छोड़ दिया राज अच्छा एक ही क्लास में एक ही क्लास में अच्छा दूसरा भी होता है टेस्ट होता है जी पांच एक
चलो जल्दी जल्दी स्कूल सिग्नेचर Then neighbor shift होगी बस फिर पापा ने एक ऑप्शन किया यहाँ रहना है या neighbor से रहना है ये भूल जाता है हो गया अबे 3 जन लगा मैं याद हूँ क्या है नाम तो मिलना है भाई कैसा अकेले बैठे हैं और कैमरा इधर पे है क्यों क्यों बता बस एक नहीं होगा वैसे नहीं सेम चल रहा है ये देखिए ये हैवी है कर दिया पाँच अरे भाई वो ना मैं हार्ड कर देना और लास्ट ईयर के पीछे बात कर लेगी मैं मुझे हार्ड करेगा अच्छा अच्छा
मैं पेपर में यही और टेबल लगाएंगे अरे वो पेपर में चेंज इलेक्शन है पेपर का से ले कौन से मैं पेपर का ये है इसमें रिव्यू करके भाई यूटिलिटी रेवोल्यूशन करवाना नहीं कौन सा इनोवेशन है भाई अच्छा बस वही बहुत दिन के बाद हाँ ये sit down अरे आज सब एब्सेंट है किधर है शिफ्टेड हाँ कौन एब्सेंट है क्या नाम है आपका I think you are a new student ना what's your name Ansh लक्ष्य किधर है you also what's your name Vatsal yes ठीक है Abhipraya is there Riya Advay Varan Aditya दोनों आदित्य है और कौन है आर्यन तुम हो राइट ठीक है चलो गुड कैसा गया सब एग्जाम अच्छा गया सब पूरा फुल एंड डिड यू गेट द रिजल्ट्स नहीं आपको मिला यू आर आल्सो न्यू स्टूडेंट व्हाट क्या नाम है आपका नाम क्या है आपका आदित्य अच्छा हाँ हाँ अच्छा आदित्य शिंदे प्रवीण शिंदे आदित्य प्रवीण शिंदे चलो ठीक है today we are going to start with the topic number 1 have you started in the school yes हाँ क्या स्टार्ट किया आपने the first four chapters फर्स्ट टॉपिक आर ओवर अरे इतना फास्ट हो गया आपका अच्छा कब से स्टार्ट किया आपने School on the like हमारा से एग्जाम है हमारा और अप्रैल को एग्जाम है February 4 से चालू होगा ओके टाइप ऑफ प्रीवियस बच्चे कहाँ पे थे आप सब लोग आपको याद कर रहे हैं अरे समझ लो ग्रेविटेशन फोर्स है चलो ठीक है अब हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स ओके so that particular topic already we have discussed in mind but we will try to brush up with the periodic table ठीक है और पीरियोडिक टेबल को हमने 3-4 सॉन्ग्स 10 बार सुन लिए हाँ तो अभी वो हम लोग बाद में देखेंगे आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर बट एट दिस मोमेंट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक फर्स्ट इज पीरियोडिक टेबल राइट what we are going to learn in this periodic table and its classification of elements okay we are going to learn about a systematic arrangement of those elements on the basis of the increasing order of their atomic number because atomic number is a fundamental property of an element because with the help of atomic number what we can write the electronic configuration but before we start with this session okay this is very important because this is a crucial year of your life like a turning point तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले क्या करना पड़ेगा because this is the first day तो आपको क्या करना है you have to close your eyes and do 1 minute prayer okay or whatever prayer you do in your school or maybe in your at home 1 मिनट हाथ बंद करके concentrate करो okay and take the blessings of let us say whatever prayer you do okay then we will start with this session because then only because everything should go well before the exam during the exam and after the exam also and maybe later on also okay and not only for you for all others your friends relatives everybody should be actually what happy so that kind of wishes you have to ask to the Almighty so just close your eyes and then just pray for 1 minute whatever prayer you do at home or in the school assembly
moment you finish, you can open your eyes. Okay, now let us see this particular part. पहले ये समझ लेते हैं कि what is this basically periodic table. Periodic table is based on atomic number. Atomic number is a fundamental property of an element. ठीक है? Now fundamental means what? With the help of atomic number, we will be able to write the electronic configuration. Once we are able to write the electronic configuration, we come to know the valence electrons. Through the valence electrons, we will come to know the chemical properties of those elements. Why the element will be reactive or non-reactive, we come to know from valence electrons. Secondly, from valence electrons, we actually try to understand the type of bonding that element can form. Ionic bond, covalent bond. So through bonding, we can come to know the physical property, density, hardness, melting point, boiling point. ये bonding से आएगा. Valence electrons से आपको chemical reaction या chemical property show करेगा वो element. यहाँ अगर very few electrons are there in the outermost shell, then it will be metal. Metal means they will lose electrons. Lose means what? They will be reducing agents. Whereas when they have many electrons in the outermost shell, valence electrons, definitely they will try to gain. So they are oxidizing agents. So they will be placed on the right hand side of the periodic table. So we come to know the placement of those elements and their properties related with what? Electronic configuration. But electronic configuration will write with respect to what? Atomic number. So our new periodic table is always based on atomic number. Because atomic numbers have physical properties identify कर सकते हैं और chemical properties. And what is physical and chemical? Chemistry. Study of physical and chemical properties of the elements and their compounds, of course, and of course uses also related with their properties is nothing but chemistry. So chemistry पूरा हम लोग इसमें से देखें. But before that, what is this periodic table? We are going to see Mosley's periodic table. because अभी तक कोई भी ऐसा periodic table बना नहीं जो Mosley को actually वो अभी तक क्या बोलते हैं challenge कर सके. This Russian chemist Mosley, he came out with this periodic table, and till today nobody else has given the periodic table so favorite among the students and teachers of chemistry. So let us understand this Mosley's periodic table. क्या है वो? It's a long form of the periodic table where the elements are systematically arranged in the increasing order of the atomic number in such a manner that when we arrange the elements in the increasing order of the atomic number, the elements coming under one particular group will have similarities in the properties, and the elements which are coming in different groups will have dissimilarities in the properties. So different groups, dissimilarity in the properties, same group, and just like you are having a family, so in your group of members of the family, your properties will be matching, your properties will be similar, but you and your neighboring family members will have difference in the properties. Remember, so same way over here. So let us see that periodic table. I'll draw it, okay, and then we'll discuss out one by one. ये लिखा आपने? लिखो, इसको लिखो पहले. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. Now let us come to the periodic table I'll draw, and then today we'll discuss at least the basics of this periodic table.
and also, of course, the periodic properties. Clear? Hai? सबने? Okay. Now let us see this periodic table and understand the elements, the symbol. Let us get accustomed with the symbol of those. Let us see this modern period. It's also called modern periodic table. ठीक है? यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे पीरियोडिक टेबल। आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेना है, स्केल लेना है और पूरा पेज पे लेना है बेसिकली पीरियोडिक टेबल। कैसे बनाएंगे आप, ये बुक ऐसा है, ठीक है? आपको क्या करना है, either you can take both the pages together and draw in this manner, or you can take in this manner, ठीक है? Whichever is convenient for you, आपको ऐसे ड्रॉ करना है। But without periodic table drawing, you cannot move further.
सर डीएम तो कनेक्टेड होता है हीलियम कनेक्टेड है लेकिन अपने को उसका भी प्लेसमेंट थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो इन लोगों में से बात आके test and test is with DL So starting with पहले वो दूसरा को प्रेफर करेंगे
California, right? सभी आते हैं थोड़ा सा इधर। Almost याद रहता है कि जो नए नए एलिमेंट्स है तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक है। Okay, let's see this. यहाँ पे ये thank you. I'll wait for some time.
Yeah. Okay. Done. Let's come to the explanation of this modern periodic table given by Moseley. ठीक है? सबका हो गया? लिख लीजिए पूरा. This you written? ये लिखा आपने? नहीं सर. लिखो उसको भी.
Okay. Let's start working on this. You know, थोड़ा सा बचा है वो रहने दो. Then I'll give you some time to write. Now, this modern periodic table is actually what? A wide periodic table has got 18 vertical columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 vertical columns are called as what? Groups. So vertical columns को क्या बोलते हैं? Groups. Then there are 7 horizontal rows. In the first row, we are having only 2 elements, which is the shortest period. Then second and third are actually short periods containing 8 elements only. Then fourth, fifth are having little bit longer periods, which are having 18 elements. Here, sixth and seventh, there are 32 elements. इन लोगों को count करके ये 14 और ये 18, 32 elements are there. Okay, so when we try to actually understand this periodic table, तो ये actually what ऐसे नहीं है, ये सब vertically stand कर, like twin towers. अगर periodic table ऐसे बिछाएंगे आप, तो ये twin tower ऐसे दिखेगा. अभी ऐसे है तो यहाँ से ऐसे दिखेगा. Lanthanum, okay, lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, ऐसा कर. ठीक है? These elements, why they are placed together? Because they are having very close resemblance according to Mosley. इन लोगों का resemblance इतना strong है क्योंकि इन लोगों का atomic size जो है वो almost similar है. Okay, what is the reason that you are going to see? But at this moment, first 2 elements in the first period, okay, then 8 elements second and third is the longest period. Now we see the periodic table is divided into 4 categories of elements. Types of elements 4 प्रकार के. Noble gases, extreme right hand side. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, ganeson. These are the noble gases with the 0 group elements. I mean the 0 incompletely filled shell. Because all the shells are completely filled. And since they are completely filled, they are highly stable. They don't react under normal condition. Then the elements which are actually what? 1, 2. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Plus, ये वाले boron, aluminum, helium, indium, thallium, neoium, carbon, okay, silicon, germanium, tin, lead, flavorium, then moscovium, bismuth, antimony, arsenic, phosphorus, nitrogen, ठीक है? Livermorium, polonium, tellurium, selenium, sulfur, oxygen, calcine, okay, astatine, iodine, bromine, chlorine, and then what? Fluorine. These सब elements इसमें आ रहे हैं. क्या बोलते हैं? Normal elements. Means what? The last shell is only incompletely filled. एक ही shell incompletely filled. That means they are very reactive. They are very desperate to undergo stability by chemical reaction. So some of them they will form ionic bonds, some of them they will form covalent bonds. The ones which are non-metals will form covalent. The ones which are ionic, metals, truly metals, they are going to lose electrons and they form ionic bonds. Okay. Then when we talk about the in-between, the middle part of this particular group is actually called as transition elements. What is the meaning of transition? Because there is a transition in the properties of these elements. जैसे तुम ये periodic table के तुम पास करते हो तो यहाँ पे तुमको transition दिखेगा. Okay, जैसे तुम्हारा ट्रांजिशन एज क्या है 9th स्टैंडर्ड से जब तुम 10th स्टैंडर्ड आ रहे हो या 8th से 9th आ रहे हो तो बड़ा चेंज आ रहा है. चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ बिहेवियर, चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, दाढ़ी आना शुरू हो जाए. इसका मतलब क्या है? देयर इज अ ट्रांजिशन एज वी कैन सी एट दिस मोमेंट एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज अ चेंज ऑफ वॉइस. हार्मोनल चेंजेस. चेंज ऑफ वॉइस का मतलब ये ट्रांजिशन पीरियड. फिर 10 के बाद पूरा तुम्हारा 2-4 साल के बाद कुछ चेंजेस नहीं है, फिर वापस थोड़ा चेंज होगा. ये ट्रांजिशन पीरियड 8 से 9th, ओके, और उसके बाद थोड़ा सा और आगे. एनीवे, for this change which you find, like sometimes you become cranky, you become angry most of the time, okay, because of hormonal changes. तो कभी-कभी चेंज हो, कभी-कभी तुम एकदम क्वाइट हो जा रहे हो. तो ये सब hormonal changes. यानी एक ट्रांजिशन आ रहा है. ठीक है? Now what is important? The 3 to 12 जो group है, इसमें कौन से elements? Cadmium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron. All of them are metals only. This is the metal area basically. ठीक है? And they are heavy metals. That's why इसको chemistry of heavier metals भी बोलते हैं. Higher standard पे इसका
ये टॉपिक है chemistry of heavier metals. This is the chemistry of lighter metals. ये lighter metals है, ठीक है? But 3 to 12 are transition elements. Why? Last two shells incomplete. That means they are slightly less reactive because they have to complete 2 shells. And at the bottom of the periodic table, inner transition, like lanthanum से लेके lutetium and actinium से लेके lawrencium तक, ठीक है? इसमें last 3 shells incomplete period, which are placed in 6th and 7th period and the third group. Third group इधर है, ये देखो, और 6th period ये है, और 7th ये placement है लोग. Placement इधर ही है, but यहाँ पे सबको अलग-अलग दिखाने के लिए हम लोग नीचे लिखे हैं. Okay, so that is the idea over here. Now, what is important over here is that as we move from left-hand side to right-hand side, what actually happens? You find that the elements like lithium. Now, before that, the first group elements except hydrogen are called as alkali metals because they react with water and form alkaline solution. Alkaline earth metals means group 2 elements where these metals will always combine with oxygen. You know, हमेशा ऑक्सीजन के साथ रहते हैं. इसको अर्थ मटेरियल को, और जब इसको पानी में तुम डालोगे ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे. मैग्नीशियम ऑक्साइड will form magnesium hydroxide. So they are earthy materials, okay, in the form of oxides. Any earthy material means oxide only, ठीक है? When react with water it will form what? Magnesium hydroxide, यानी alkaline, basic. That's why they are called alkaline earth metals. The elements which are in the 16th group are called chalcogen. Chalco means चलो लिखा है CHA. Chalcogens means, chalco means what? Ore forming. Normally metals always occur in the form of what? Ores, like copper oxide, copper sulfide. In a sulfur or oxygen metal के favorite element. हमेशा sulfide या oxide form रहते हैं. या chloride भी होता है, लेकिन mainly these two elements they are favorite for metals. Okay, sodium sulfide, sodium oxide, ये सब. So that's why they are called chalcogen. Chalco means ore forming. Gens means genes. Genes means producing. Halogens, देखो सब में gens आ रहा है. ठीक है? Gens का मतलब है producing. Halo means what? Salt producing substances. Halo means salts. Okay? This comes from the word halos. Halos means salt producing substance. Like sodium combined with fluoride to form what? Sodium fluoride, sodium chloride, sodium bromide. Very famous salts. ठीक है? The salt which we eat, sodium chloride. ठीक है? Now, so if you see this periodic table, how to actually what? Now, how they are actually having similarities in the properties. When we write the electronic configuration, according to Mosley, how to arrange the elements. Element number 1 hydrogen, वहाँ पे जाएंगे. Element number 2 helium, फिर यहाँ पे 3, 4, 5. That means this is the start of the periodic table. That is the end. ये starting date है और वो ending date है. ठीक है ना? यहाँ से entry होगा, वहाँ से exit. ओके, अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2,1. सोडियम का क्या लिखेंगे? 2,8,1. 11 एटॉमिक नंबर. So if you see that this element is having 1 electron, this element is also having 1 electron as outermost shell. As a result, their valencies are same. And since their valencies are same, their chemical properties also will be similar. Their behavior will be similar. So if you see 2,1, 2,2, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे शेल ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज हो जाता है. ओके, फिर से यहाँ नया शेल ओपन होगा. 281, थर्ड शेल. 281, 282, 283, 284, ऐसा करके 288. That means we open the shell and then that shell closes and then we open the new shell. Now see, if you see this periodic table, the period number or let us say period number 3 है, सोडियम का प्लेसमेंट कैसे 3 आ रहा है? It is sodium is actually present in the third period and first group. Why? 1 valence electron is what? First group. 3 shells means what? Third period. That is the period number corresponds to the number of shells and the group, the valence electrons corresponds to the group number. That is the idea over here. That means on the basis of the number of shells we can identify ये element 4th period को belong करता है. This is potassium देखो. Potassium atomic number 19, इतना 2881, यानी 4 shells हो गया. 4 shells का मतलब है 4th period. But how many valence electrons? 1. So it is most of the periodic table का जो placement है, according to the electronic configuration we are getting. Okay, so likewise, of course, this periodic table is further divided into S block, P block, D block, and F block. उसमें क्या होता है? For example, elements, atoms में scientists ने find out कि they are not shells of
there are subshells also. So these subshells are actually indicating that there are, for example, smaller parts of the shells which are called subshells. So in subshells also, when the atoms are actually having electrons, then we can come to know how there are 10 electrons in the outermost shell. मालूम पड़ेगा. Okay? Yeah, for last three shells कैसे incompletely filled up. But that is higher part of the topic, which is nothing but related with the subshells concept, or which is also called orbitals. Orbit का दूसरा नाम है orbitals. ये wave concept है. और what is a particle concept क्या है? Orbit. They consider electron to be a particle, but electron is also wave. Wave means something which carries energy. जैसे light दो dual nature show करता है. It is made up of particles as well as wave. Can you catch those light particles? No. But there are two dual nature, particle as well as wave. Everything has got dual nature. Like you are having a dual characteristic. At this moment you are acting as a student. Okay, but at home you are acting as a child. तो तुम्हारा दो नेचर दो रोल प्ले कर रहे हो, डुअल रोल हो. ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन का दो है. इलेक्ट्रॉन इज अ वेव लाइक एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल आल्सो. रिमेंबर. ओके, तो वो भी डेफिनेटली वो हायर स्टैंडर्ड में. Instead of being a wave and a particle, it's a wave or a particle, depending on the current state of observation or not. Yes, definitely. Current state of observation क्या है? Okay, whether it's coming out from the source. Okay, so it is a wave. When striking on something, it is a particle. That is the meaning. Okay, now let us come to the next one. And what is that? That when we write the periodic table, okay, there are certain properties which are periodic in nature. What is the meaning of periodic properties? The properties which repeat at regular intervals. अब देखो कैसे 281, 282, sorry, 21, 22, 23, 24, 25, well, then again 281. Yes or no? That means the electronic configuration repeats after regular intervals. So as the electronic configuration repeats, the chemical properties also repeat after regular intervals. It's like saying this way. अभी क्या चल रहा है? Summer. Summer के बाद rainy season. Rainy season के बाद winter. Winter के बाद summer के बाद फिर से अपना rainy season. जैसा phenomenon is existing in the periodic form, elements, the properties of these elements are also actually what undergoing a periodicity. Remember, okay, periodicity is like, see, for example, पहले आपको high marks मिला, फिर नीचे low आया, फिर high हुआ, फिर low आया, ये cycle चलता है. Like 1 or 2% आपको नीचे मिला, sir, then you start doing hard work, again it increases. Then you become complacent and say, oh, sir, then again you slightly dip. Okay, so most of the time what happens, normally this process of cycle is normal basically. Okay, that is ideal. ये लिखा सबने. What is the time by your watch? Oh, we'll have a break over here and then after the break, we'll discuss the next part. Okay, क्योंकि अभी ये time पे तुम लोगों को थोड़ा सा should not go heavy. हम लोग एक break लेते हैं. Break करने के बाद AC बंद कर दो. क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है. किधर है रिमोट? इधर रिमोट.